बेसिकली बेटा क्या है कि देर आर हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स हैविंग मल्टीपल सिस्टम्स। ठीक है ना, वो टैली अकाउंटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, एसएपी तो प्रोडक्शन प्लानिंग, करेक्ट, लेट्स अज्यूम माइक्रोसॉफ्ट फॉर से डायनामिक्स एक्सेट्रा। एम आई क्लियर? Similarly, there are hundreds of ERPs, standalone as well as web-based, right? ठीक है ना, which are operating with Tally as their customers. Okay, so I'll tell you what exactly I had proposed and then take a call कि भाई हुआ क्या था, मतलब उसका उसका था क्या exactly, है ना? So what happens is that if you have two different systems, then one needs to consolidate data. करेक्ट भाई, मेरे को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट चाहिए। फॉर एग्जांपल इन द प्रायर प्रोजेक्ट यू पुट इन अ टैली, ओके, यू पुट इट इन SQL सर्वर। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हेन SAP comes into picture, then how do you get the consolidated picture? Is it clear? भाई ये कैसे होगा ना? Now the current scenario is, how currently the companies are doing is they are inserting the data into tally। वो क्या करते हैं, अपने ERP सिस्टम से दे पुट इट इनटू टैली। इज इट क्लियर? मैंने टैली में डाल दिया, ठीक है ना, एंड देन यू गेट अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फ्रॉम देम। सो टैली, besides being a transactional system, is being used as a data warehouse also. So your competitor is tally. Are you getting it? Can I just take this call for a second? फिर से हमारा जो competitor है वो tally है। Is it clear? So like in your prior project, hello, hello, हाँ हाँ हाँ, हेलो, आप सुनाई दे रहा है? And now in your prior project, what they are probably thinking is they will take the SAP data and insert into Tally. So they will get the same number. Is this clear? So what I did, मैंने नहीं किया अभी तक। Like जैसे कि इसके बाद 11th क्या कर रही थी, जो वो क्या कर रहे थे ना, उन्होंने किसको टीटीएल टूल बनाया? भाई ऐसा था ना, उन्होंने क्या किया, उनका एक ऑरेकल का सिस्टम था, राइट, दे हैड टैली। So what were they trying to do? They were trying to insert data into tally. That's what they did, right? That's what their project was, right? So what is the consolidated data warehouse? Tally. It is not a SQL database, because Oracle will not allow you to insert database from tally like that. You cannot just insert it. Outside of India, this is only Indian process. ये बाहर तुम्हें अलाउ ही नहीं करेंगे, वहां पे सार्बिन ऑक्सले एक्ट बनता है, एक्ट बन चलता है यूएस में। वहां पे कभी भी यू कैनॉट, नो डेटा वेयर हाउसिंग कंपनी आउटसाइड ऑफ इंडिया, यूएस वगैरह में कभी इंसर्ट नहीं करते वो लोग। उसका रीजन क्या है कि अगर वन मिस्टेक एंड यू आर लायबल फॉर बिलियंस ऑफ डॉलर्स।
एग्जैक्टली तो जो हमने अप्रोच की है, वी एक्सट्रैक्टेड द टैली डेटा ऑनटू सीक्वल सर्वर। यहां तक हम पहुंच गए। अब इसको करने में बहुत टाइम लगा बिकॉज टैली इज नॉट डॉक्यूमेंटेशन। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉफ्टवेयर इन टर्म्स ऑफ यूसेज, बट इसका मेटाडेटा किसी को पता नहीं है। And then they will bring the SAP data onto the same database. So consolidated numbers are not in Tally, but in the consolidated SQL Server database. ये समझ में आया? इसको कहते हैं डेटा वेयरहाउस, जो कि बाहर आउटसाइड ऑफ इंडिया इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री। ये समझ में आया तुम्हें क्या हुआ वहां पे? ठीक है। सो इन योर करंट असाइनमेंट आई टोल्ड द सीटीओ बॉस कि ठीक है, आप अगर टैली को एज एन ईटीएल डेटा वेयरहाउस ले रहे हो तो वो हो गया, फिर वो तो हैंडल कर ही लेगा ना बंदा। पर अगर आपको दोनों एसएपी और टैली को दोनों को कंसोलिडेट करना है तो यू कैन ऑल्सो यूज आवर डेटाबेस। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ओके। नाउ बेटा ऐसा है, तो इसके बेसिस पे मैंने एक डेमो बनाई है। देखो मैंने इसका ये बनाया है, ये एज अ टैली डेटा वेयर हाउस। तो अभी इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, एक एक चीज को समझ लो। दैट इज हाउ द कस्टमर इज थिंकिंग। तो रोहित, जो छोटे वाले कस्टमर्स है ना, उसमें हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पर दिस वीडियो ऑफ आवर्स कि टैली का डेटा ले कैसे जाया जाए और अंदर कैसे लाया जाए इज अ वेरी बिग हिंट दैट कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट बहुत है, उनको नेट कंसोलिडेशन चाहिए। सो if I take tally as a data warehouse, right? अगर मैं tally as a data warehouse use करूँ, not as a transaction system, but majority of the people are using tally as a data warehouse। वो एक्सेल से इंपोर्ट कर देते हैं, वो किसी एपीआई से इंपोर्ट कर देते हैं, उनके डायरेक्ट एपीआई व्हाट्सएप वगैरह के लिंकेजेस हैं, वो थर्ड पार्टी ऐप से भी लोड कर लेते हैं। टैली एआई से कर रहे हैं, तो दे आर ऑलरेडी यूजिंग इट एज अ डेटा वेयरहाउस। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इट्स अ गुड वन और अ बैड वन। So how is Tally being used as a data warehouse? Because multiple systems have been pushed in. Multiple companies are consolidated. All reporting has been run from it and the history is kept on in. Right? यही तो है ना? But Tally was never a data warehouse. It was always a transaction system. ये clear है? Now, why Tally as a warehouse is a good positive is because you already own it. भाई मेरे पास टैली का लाइसेंस है, मैं उसको उसमें अंदर डालूंगा, कोई टूल वूल नो डेटाबेस नथिंग आई नीड टू डू। दूसरी बात यह है कि माई अकाउंटेंट इज फेमिलियर। अगर मेरा अकाउंटेंट फेमिलियर है, मतलब इट्स एज गुड एज माई वाइफ बीइंग फेमिलियर विद इट। मेरी पूरी टीम को टैली पता है। एंड देयर इज ओनली वन प्लेस टू लुक। भाई मैंने टैली में डाल दिया, मेरा सब खत्म हो गया। एंड स्मॉल स्केल पे इट्स गुड इनफ। ये क्लियर है? बट टैली एज अ वेयर हाउस, जो कॉन्स में क्या है कि यू कैनॉट क्वेरी इट एट अ डेप्थ। फिर इसमें हिस्ट्री नहीं है, जो कि हम लोग 58(6) की बात कर रहे हैं। यूएस में सार्बन ऑक्सले एक्ट है, जो कि तुमने ये हैंडल किया। फिर व्हेन द डेटा इज वेरी लार्ज इट स्लोज डाउन, धीमे हो जाता है।
Then there is always a reconciliation gap between जहां से आपने डेटा डाला और टैली का. आपको कैसे पता कि पूरा हुआ है? Is there a difference in trial balance? देखो बेटा, मैंने क्या किया, एसएपी का डेटा सपोज आई पुट इट इनटू टैली. टैली जनरेट्स इट्स ट्रायल बैलेंस. SAP generates its trial balance. How do we know whether there's not a mismatch? सारे ट्रांजैक्शन आने चाहिए ना. बिजनेस लॉजिक हैज टू बी आल्सो द सेम. नहीं आया समझ में? करते रहो तुम, टैली में टेस्ट करते रहो और इसमें टेस्ट करते रहो. बट सपोज यू इंसर्ट द डेटा ऑफ द सेम कंपनी इनटू टैली. आप उसी कंपनी में टैली में यू आर आल्सो एंटरिंग द डेटा, एंड देन फ्रॉम द सेम कंपनी यू आर इंसर्टिंग द डेटा फ्रॉम एसएपी आल्सो. हाउ विल यू चेक द ट्रायल बैलेंस? देखो रोहित, तुम समझो ना बेटा, मेरी एक टैली की कंपनी है सपोज. ठीक है ना? I am inserting data into Tally, and I'm also inserting data into Tally from SAP. अब मैं ट्रायल बैलेंस मैच कैसे करूंगा? नहीं हो पाएगा ना. प्लस ये जो बात इसमें हम लोगों ने नहीं लिखी है और जो कि हो सकती है, वो ये हो सकती है, सेपरेशन नहीं है ना. मतलब मेरा पूरा मैं इंटायर टैली कैन गो फॉर अ टॉस. इट्स अ ट्रांजैक्शन सिस्टम ना. मेरा पूरा टैली उड़ जाएगा. तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? टर्बो डेटा में यू कैन क्वेरी अप टू अ डेप्थ. आई एम प्रिजर्विंग हिस्ट्री. Then analytical system slow नहीं होगा. Once I extracted, it's all done. I don't need to worry. Then I am able to reconcile to a source. So both SAP and Tally will come here. And plus it's completely separate. You're legally sound. आपका transaction data has not been impacted. ये समझ, पर इसमें नेगेटिव क्या है? दिस एन एडिशनल लेयर. उसमें एक ओनर पक्का चाहिए होता है. So for a person with a single company, it's an overkill. And the value is felt when there is complexity. ये क्लियर है? So now question is, you using Tally as a data warehouse, they're already use it. Turbo data is the real data warehouse. Complete consolidated, reconstructible and fast. That is the real ones. Is it clear?